Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our second cranial nerve. If you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today, I'm going to talk about our third, fourth, and sixth cranial nerve, which is oculomotor, trochlear and abducens nerve. मतलब आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में रहने वाला तीसरा, चौथा और छठी क्रेनियल नर्व्स के बारे में, जो आपका ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्डुसेंस नर्व है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ओकुलोमोटर नर्व का दो हिस्सा है, एक आपका जनरल सोमेटिक इफेरेंट, दूसरा जनरल विसरल इफेरेंट। दोनों हिस्से का दो न्यूक्लियस आपका मिड ब्रेन में रहता है। ठीक है, तो जो जनरल सोमेटिक इफेरेंट है उसका ओरिजिन होता है ओकुलोमोटर न्यूक्लियस से, और जो जनरल विसरल इफेरेंट है वो होता है आपका एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से। ठीक है, इस ओकुलोमोटर नर्व के अंदर आपका जनरल सोमेटिक इफेरेंट, जनरल विसरल इफेरेंट दोनों हिस्सा इस मोटे वाले तार के अंदर में रहता है। ठीक है, क्या होता है, ये जब सामने जाता है, सामने जाते जाते क्या होता है, दो आर्टरी पड़ता है, एक ऊपर में एक नीचे में। ऊपर वाला आर्टरी को हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, जो हमारे सेरिब्रम का पोस्टीरियर वाला जो हमारे सेरिब्रम का पीछे वाला पार्ट को सप्लाई करता है, जो आपका ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, और जो नीचे में एक आर्टरी थे, इसका नाम है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो आपका सेरिबेलम का ऊपर वाला पार्ट को सप्लाई करता है। एनीवे, तो दोनों आर्टरी, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। ठीक है, तो दोनों आर्टरी के बीच में से निकलता है ये ओकुलोमोटर नर्व। ठीक है, अब सामने बढ़ते बढ़ते क्या होता है, साइड में आता है आपका कैवर्नस साइनस। तो इस कैवर्नस साइनस की भी लैटरली मतलब साइड से निकल जाता है सामने की तरफ। सामने चलते चलते ये क्या होता है, जब ये हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, हमारा जो आँख है, आँख का पीछे क्या है, हड्डी है, हड्डी के पीछे तीन छेद होता है। ठीक है, एक ऊपर वाला छेद जिसको हम कहते हैं सुपर ऑर्बिटल फिशर, नीचे वाला छेद जिसको हम कहते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और एक बीच में रहने वाला छेद जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक कैनल। ऑप्टिक कैनल के बारे में मैंने तो पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, ऑप्टिक नर्व के बारे में, तो वो पार्ट खत्म हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की, मतलब ऊपर वाला छेद। तो इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर घुसने से पहले ही ये ओकुलोमोटर नर्व दो हिस्से में बच जाता है। ठीक है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, दोनों हिस्सा सुपीरियर ऑर्बिटल के फिशर अंदर घुस जाता है। खस हो गया। अब घुसने के बाद क्या होता है, ये जो जनरल सोमेटिक इफेरेंट है, ये जनरल सोमेटिक इफेरेंट कुछ मसल होता है हमारे आंखों के बाहर, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। इस मसल को सप्लाई करते हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। ठीक है, तो ये सब इतने सारे मसल है। ठीक है, इनमें से कुछ मसल को ये सप्लाई करता है। तो आंखों के बाहर जो मसल है आपका सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक, ये चारों मसल को ये सप्लाई करता है आपका जनरल सोमेटिक इफेरेंट। ठीक है, व्हाट आई मीन इज दिस ओकुलोमोटर नर्व arises from midbrain, so it has two parts. One is general somatic efferent, another is general visceral efferent. Okay, both part arises from midbrain. General somatic efferent arises from oculomotor nucleus and general visceral efferent arises from Edinger Westphal nucleus. Both nucleus are present in midbrain. As you can see in this photo, the thick fiber of oculomotor nerve is exiting from midbrain. On its way, there is two artery, one artery above, another artery below. The above artery is known as posterior cerebral artery. Okay, it supplies the posterior part of our cerebrum, which is our occipital lobe. Anyway, and the below artery is known as superior cerebellar artery. And in this two artery, in between the oculomotor nerve passes. Okay, now while it's traveling anteriorly, there comes another structure which is known as cavernous sinus. So this oculomotor nerve passes or crosses the cavernous sinus laterally. Okay, and goes anteriorly. After going few distance from cavernous sinus, this oculomotor nerve divides into two parts. One is upper part, another is lower part, and both part enters into the superior orbital fissure. Now behind our eyeball there is bony structure, and in this bony structure there is three foramen. One foramen is above, which we call upper or superior orbital fissure. The below foramen is known as inferior orbital fissure, and the middle foramen is known as optic foramen or optic canal, which I already talked about in my earlier videos of optic nerve. So I am talking about now superior orbital fissure, I mean upper foramen. After entering, it supplies the few muscles of our extraocular muscle of eyeball, and these extraocular muscles are superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique and inferior oblique. Okay, there is a shortcut mnemonic which is known as SO4LR6.
SO means superior oblique and 4 means trochlear nerve. So superior oblique muscle is supplied by trochlear nerve, gone. And LR means lateral rectus and 6 means abducens nerve. So lateral rectus muscle is supplied by abducens nerve, gone. Now as you can see, the inferior part of oculomotor nerve, there is a green fibers. Okay, so these green fibers are known as general visceral efferent. Okay, and this fiber originates from Edinger-Westphal nucleus. You guys already know about that. Now this fiber enters into the ciliary ganglion. Okay, and from this ciliary ganglion another course of fiber arises and enters inside of our eyeball by piercing 10 layers of our eyeball. As I already told about in my earlier videos that our eyeball has 10 layers. Okay, so these new fibers from ciliary ganglion enters inside of our eyeball by piercing all those layers. Okay, and supplies the 2 category muscles inside of our eyeball. As you can see, this is a black part of our eyeball. This is known as iris. As you can see in this photo, this iris is maximum people has black color, few people has brown color, few people has blue color, few people has green color, etc. So this iris contains 2 type of muscle. One is sphincter pupillae, another is dilator pupillae. Okay, so these 2 category muscles supplied by this general visceral efferent. Another, there is a lens behind the iris which is held by 2 group of ciliary muscle above, ciliary muscle below. So these ciliary muscles also get supplied by general visceral efferent. Okay, so there are 2 category muscles supplied by our this general visceral efferent which is a part of oculomotor nerve. तो अभी हम बात करेंगे trochlear nerve के बारे में. Now we will talk about our 4th cranial nerve which is trochlear nerve. This nerve arises from our midbrain, but it arises from the posterior part of midbrain. It is very deep seated nucleus. Okay, so the nucleus is known as trochlear nucleus. Anyway, so there is 2 nucleus, one for right side, another is for left side. Now here comes one fact about this trochlear nerve. The nerve fibers arising from right sided trochlear nucleus goes left side and supplies the left sided part, and the fibers arising from the left sided nucleus goes right side and supplies the right sided part. Okay, मान लो ये मेरा बॉडी है, ठीक है, ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर और ये वाला पार्ट है एंटीरियर. ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला साइड मिड ब्रेन का और ये सामने वाला साइड है. ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ पीछे वाला साइड का. क्या होता है, इधर में रहता है आपका 2 न्यूक्लियस, एक राइट साइड का ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, लेफ्ट साइड का ट्रोक्लियर न्यूक्लियस. ठीक है, दोनों न्यूक्लियस से ही आपका ट्रोक्लियर नर्व का फाइबर्स निकल रहा है. ठीक है, निकलते ही क्या होता है, राइट साइड का फाइबर लेफ्ट साइड में चला जाता है और लेफ्ट साइड का फाइबर राइट साइड में चला जाता है. ठीक है, डाय साइड का फाइबर और बाय साइड का फाइबर दोनों आपस में क्रिस क्रॉस कर लेते हैं. ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कनेक्शन कर लेता है, करके सीधा पीछे मतलब सामने की तरफ चला जाता है. ठीक है, सामने की तरफ जाके हमारे सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करता है. बस इतना ही और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि मेरे डाय आंखों का, तो अगर आपको पूछा जाता है कि आपके राइट साइडेड आंखों का जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है ये सप्लाई कौन कर रहा है, लेफ्ट साइड का ट्रोक्लियर नर्व. ठीक है, और लेफ्ट आंखों का जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है इसको सप्लाई कर रहा है राइट साइड का ट्रोक्लियर नर्व. ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं. और हम बात कर रहे हैं एब्डुसेंस नर्व के बारे में. ठीक है, दिस एब्डुसेंस नर्व arises from abducens nucleus which is present in our pons. Pons is the middle part of our brainstem. Now, after arising from pons, these nerve fibers straightly enters inside of our eyeball through superior orbital fissure and supplies the lateral rectus muscle for abduction. That's why it's known as abduction या abducens या abducens. Okay, now abducens, this word does not make any sense, that's why we call it abducens. Okay, anyway, these are all about our 3rd, 4th and 6th cranial nerve. So 4th and 6th cranial nerves are very short. तो फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय.